1, 2, 3, 4. Hello everyone. Welcome to another episode of SochCast. And today's topic is about AI engineering. And I'm extremely excited because personally, like with all the recent news about OpenAI, का जो ChatGPT wala platform and the craze that it has caused all over the internet, I have so many more questions than I did before. And luckily, I have an expert who can answer many of those for me. But before we start, let's give kind of हमारा जो usual background information देना guest के ऊपर हम थोड़ी सी तहकीक करके उनके background information में detail के बारे में बता दें. So I'll very quickly start with that. So my guest here is Ali Rehan. Ali completed his bachelor's in computer science from LUMS in 2010. After which he did his master's in computer science from LUMS right after, with a special focus in computer vision. उसके बाद he started his own startup. He co-founded a startup with the name of Groopic, and this was in Bay Area, San Francisco. Groopic, and we'll hear more about this from Ali as well, was a software company that developed computer vision technologies for smartphones. And then after that, working there for 5 years, he moved to Motive, and he's now the director of engineering at Motive and leads their AI team. Motive, who don't know, which was previously, I think AI and CV teams. You had to correct me there, right? Yeah. So Motive, which was known as KeepTruckin, combined. So I kind of found it hard to kind of group Motive into one. Like, अच्छा वो IoT company है, AI company है, वो logistics tech में तो मैंने उनकी जो LinkedIn पे definition थी, I just took that. And I kind of just, so Motive is basically combines IoT hardware with AI-powered applications to connect and automate physical operations. Motive is a multi-billion-dollar valued startup, and it's founded by a Pakistani called Shoaib Makhani. And it's one of the very few companies to invest in Pakistani tech talent right from early on. Like, it's been here for quite a few years, almost a decade now. And it's like generally Pakistan में जो technology companies होती हैं वो अपना कस्टमर सर्विस या बैकएंड आपका सेंटर शुरू करती हैं. यूजुअली प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग नहीं होती, बट मोटिव वाज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज टू डू दैट, एंड राइट नाउ दे हैव मोर देन 4,000 एम्प्लॉइज ग्लोबली. So welcome to the podcast, Ali. It's a pleasure to have you here. Thank you so much for having me here. Yeah. So Ali, before we kind of talk a lot about, we delve more into your experience and specifically into AI, let's trace your journey. आपने LUMS से शुरू किया, you did your bachelor's in computer science in 2006, and then to Bay Area. So help us kind of trace that journey for us. So I think I'll talk about my journey into computer vision first, because वो एक I think was a defining time in my career, और उसके बाद से फिर things built upon that. But this goes back to 2009. मैं LUMS के अंदर we used to have this thing, SPROJ presentation, yeah, final demos. So Central Hall में, corridor में, seniors would put up their projects for the rest of the university to come and see and talk to them कि उन्होंने क्या किया अपने project में. And I was, I think, in the second or third year at the time, where I was walking around the corridor, I saw some of these projects, and there was this one project that really fascinated me. It was, they had built this magic van, जिसमें वो एक बंदा magic van से कुछ actions करता है, और there was a car that used to follow or go, stop, turn, whatnot, उसके actions पे. तो और वो ये था कि कैमरा लगा हुआ था जो एक वैन को ट्रैक कर रहा था वो सारा. So that was a pretty fascinating thing for me compared to everything else जो बाकी स्टार्टअप्स में होती है, बाकी प्रोजेक्ट्स में हो रहा था कि आपके पास एक स्क्रीन, ये एक वेबसाइट है या एक स्क्रीन है जिसके ऊपर कुछ ब्लैक कंसोल के ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, वर्सेस हियर वाज दिस कार जो एक बंदा दूर से खड़े होकर बस हाथ ला रहा है, कार चल रही है. तो ये जो कंप्यूटर विजन की फिजिकल उसमें जो डेमो और वो जो सिग्निफिकेंस या इम्प्लीमेंटेशन थी, वो मुझे बहुत एक्साइट करी थी, और that got me excited about this whole space. And then like I think also realization ये थी कि जैसे as humans we have eyes and then we have brains. Computers के पास भी eyes और brains हैं, eyes, cameras, brain, CPU, but उन वो जो बात करेंगे हमारे brains capable हैं. तो this realization के eventually I
think if you think about future जिसमें robots होंगे और सारा कुछ जितनी भी अगर मैं sci-fi की चीजें सोचूं तो it felt like computer vision is going to be a core component of all the sci-fi kind of reality जो future में कभी होगी और that basically got me excited and interested in computer vision. So I joined this computer vision lab अपने undergrad के दौरान ही और I worked in computer vision अपने final year में और उसके बाद फिर I wanted to come to US for a PhD and to prep for that I joined this lab again at LUMS, computer vision lab at LUMS जिसमें we were collaborating with Disney Research and CMU and publishing at the best conferences and journals in the world. So I joined that lab to work on some research problems जिनकी basis पे I was hoping I would come to US for a PhD. But while working on those research problems, I realized I didn't really want to work on something that just sits on the shelf for the rest of my life. So I left the research lab and convinced one of my research supervisors to leave the lab with me, and we started Groopic. Oh, that's very interesting. और उसके बाद मतलब as in, so you started Groopic and then after that? Absolutely, yeah. So Groopic हमने start की थी. It was with this idea that we know computer vision. Or we could see that there's back in 2012 there was this pretty interesting time जिसमें cameras were much more common than ever before क्योंकि cell phones में थे और cell phones की compute power बहुत increase हो रही थी and we wanted to leverage the compute power and the pervasiveness of cameras to really build some pretty exciting technology and next generation computer vision applications. So we started with Groopic. Groopic was a very fun little app. The idea was that there's a group of friends, there are 3 people, they want to take a group picture together. They don't have to ask anybody else to hold the camera for them. उन तीनों में से एक बंदा जाए बाकी 2 की पिक्चर ले और वो दूसरा बंदा जाए एक और बाकी दोनों की पिक्चर ले तो हम उसको कंबाइन करके एक कंप्लीट ग्रुप पिक्चर बना देते. So it was a pretty fun little concept for an app. और हमने जब ऐप लॉन्च की तो we got a lot of traction on the app. We were covered by CNN International, Fox, like bunch of mainstream media, tech media, और उसकी basis के ऊपर उसी दौरान we were picked up by this Google for Entrepreneurs funded program, Black Box Accelerator, इधर Bay Area में एक program था. They picked us up. They helped us. Initially, they brought us over to Silicon Valley to give us a 2-week Silicon Valley immersion course, basically to show us around के Bay Area में Valley में चीजें कैसे होती हैं. So we were a part of that program. We did well there. उसके बाद फिर the Black Box program and Google for Entrepreneurs, they helped us set up the company's basis here. I moved to US, set up the company's business, raised more money for the company, and tried to build a bigger business on top of the same core technologies हमने Groopic के लिए build की थी. We tried a bunch of different things in a bunch of different spaces, but eventually we couldn't really build a huge business, and we got acquired by KeepTruckin at the time in 2017. Or KeepTruckin, when I joined the company, I was brought on board as a product manager initially to build a new line of business for the company. So I built the whole Dashcam and safety business. I did that for the first 2.5 years, and then I realized that my DNA, my core interests are in computer vision, get more towards technology. So I switched back to technology and started working with the AI team that I lead now. Okay. No, that's such a fascinating journey, right? क्योंकि you were वो काफी ज़्यादा वो एक होता है ना कि from an event perspective वो बहुत सारे events थे that kind of came together जो आप 2010, 2012, 2013 की बात करें. That was the same time after kind of financial जो 2008 के बाद जो financial crunch था, when that started kind of cooling down, and then there was an uptick in kind of startup activity yet again. So उस period में it kind of felt that you were at the right time, you were able to leverage that opportunity. I'll come to this in a minute about आपके motive का मतलब about your experience and motive. But when you started Groopic, right, as a founder, like, did you know while you were in LUMS के this is what you wanted to do? तो एक तो पहली चीज ये कि like you told me that you didn't want your life's work to be on top of a shelf, and that's the only kind of contribution that you made, that you made.
and you wanted it to be a lot more. तो एक ये कि मतलब बस वो पर्सपेक्टिव कि मुझे फाउंडर बनना है या कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, वो चीज जो थी उसके आपने कोई पैरेलल्स या कोई एग्जांपल्स देखे थे अपने साथ में? जैसे अगर मैं आपसे बहुत सारे लोगों को पूछूं, लेट मी काइंड ऑफ rephrase that question. A lot of people see these kind of heroes, whether they are in Elon Musk's or Steve Jobs, or Bill Gates, and these are kind of the typical ones. But up to a new generation of founders are here, and they see the kind of impact, right? And they see the kind of disruption that has been done by these people, and that's what inspires them. तो आपकी जो फाउंडेशनल इंस्पिरेशन थी वो क्या थी, लाइक व्हेन यू फाउंडेड ग्रुपिक? पहला तो एक ये सवाल है. दूसरा ये कि while you were an early founder and Groopic was there for a good 5 years, I think you got traction from a lot of medias. I have some numbers here. So you were covered by CNN, Fox, TechCrunch, Gizmodo, and others. You were in top 10 paid apps in 26 countries, including US. Uske baad फिर you were best startup in media and tech award from, like, basically you won a bunch of award in terms of rising technology companies from Asia Pacific in 2013, 14, and 15. And this was kind of just done and bootstrapped in under $1,000 to begin with. So it seems like you guys are going in the right direction. तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि like you said that वो business इतना नहीं बढ़ पाया, वो product market fit नहीं मिल पाया. वो कितना जरूरी होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट? क्योंकि अगर आपके केस में तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी थी, आपके केस में probably you were one of the few people that actually came to technology first, business second, innovation first and business second, but yet still that market fit in that product market fit equation was not there. So what are your thoughts on that? Absolutely. Let me talk about the first part. Yeah. I think मैंने throughout my undergrad, पहले साल से I started working on a bunch of different projects side के ऊपर, and I think like more than a specific person or a personality, what really gave me a lot of inspiration or drive was the fact कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मैं I am this working on this unique technology. I have these unique tools कि I am not at any disadvantage compared to anybody else in the world. इस फील्ड के अंदर मैं पाकिस्तान में बैठ के exactly वही काम कर सकता हूँ जो दुनिया में कोई भी बंदा बैठ के किसी भी कोने से कोई काम कर सकता है, चाहे वो like obviously अगर कोई स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएट कर रहा है उनके पास बाकी इकोसिस्टम के अंदर काफी ज्यादा एडवांटेजेस होंगे, बट इन टर्म्स ऑफ द कोर ऑफ इट टेक्नोलॉजी या वो जो बार है वो तकरीबन सारों के लिए बराबर ही है. एंड आई कैन डू समथिंग वेरी यूनिक, आई कैन डू समथिंग वेरी इनोवेटिव, आई कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी एंड स्किल सेट टू build something and solve problems in real life. So I used to do a bunch of these things. For example, एक काम जो मैंने अपने undergrad के second या third year में किया, like I started with this right in the end of my first year during of the undergrad. I worked on this product called Chopal, जो एक SMS based social networking system था. This was before WhatsApp, and basically the idea was you could create groups और SMS मैसेजिंग के ग्रुप्स. एक ग्रुप क्रिएट कर लिया आपने 10 फ्रेंड्स ने, आप बजाय से 10 लोगों को अलग से मैसेज भेजें, आप एक उस पे ग्रुप पे मैसेज भेजेंगे, सारों को चले जाएंगे, सो ऑन. और ये आई डिड दैट ड्यूरिंग माय सेकंड ईयर ऑफ अंडरग्रेड. फिर थर्ड ईयर में मैंने ये छोड़ के आई बिल्ट अ ब्लड डोनेशन सर्विस. बेसिकली द आइडिया वाज कि आपको कोई डोनर चाहिए, ब्लड डोनर चाहिए, तो आप या अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो यू रजिस्टर ऑन दिस सर्विस. ब्लड देना चाहते हैं तो और अगर आपको ब्लड चाहिए तो यू पिंग दिस सर्विस, और वो लोकलाइज उसके अंदर लोकल एरिया के अंदर ढूंढ के आपको लोग बता देगा. आपको भी वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर नहीं जाने की जरूरत, आप फोन से सारा कुछ कर सकते हैं विद आइडिया कि वो बहुत मैसिव उसकी रीच होगी एंड सारा कुछ. तो लाइक आई थिंक फंडामेंटली अगेन द सेम थिंग कि आई knew I could use the technology to solve some interesting problems. I think that and I did these things and they gave me confidence and motivated me कि हाँ ये चीजें की जा सकती हैं. कि पहले मैंने ये दोनों चीजें छोटे लेवल पे पाकिस्तान में ट्राई की, and then with Groopic the idea was कि like it's a step up, next level के do something जो global context में global एक problem solve हो रहा हो,
with a cool, interesting product. So that I think has been my the core of my drive. जो भी ये सारा कुछ करने की. Now coming to Groopic, I think you're absolutely right. I think Groopic में we got a lot of traction very early on. और ये सारे stats top app बनना, over 1 million downloads, लोगों ने काफी pictures दी. We would see on Instagram पे लोग बहुत ज़्यादा post कर रहे थे. And all of that followed very quickly after the launch, जब उसकी सारी चीज़ की novelty थी. But as it tapered down, we realized a bunch of different things. मैं पहले let me talk about the app, and then I'll talk about some meta level understanding जो अब मेरी है about the time या learnings उसके बाद. पहले तो ये कि I think UX थोड़ा सा hard था ऐप का. It created some friction. Selfies उस टाइम के ऊपर नहीं थी, लेकिन उसके बाद selfies became crazy all of a sudden. और फिर एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी, when you're building an app like that, you're hoping कि अगर क्योंकि it certainly was our assumption कि अगर मैं ये ऐप यूज करता हूँ और मैं एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ हूँ, मैं उनके साथ पिक्चर लेता हूँ, तो वो जो मैजिकल फीलिंग है वो उस पूरे ग्रुप में होगी कि यार ये पिक्चर एग्जिस्ट नहीं करती थी इकट्ठी, और आपने बड़ी अमेजिंग पिक्चर क्रिएट कर दी है. और उसके बाद आई वुड वांट टू शेयर दिस. और ये हुआ, लोगों ने पिक्चर्स बनाई एंड पीपल शेयर्ड दोस पिक्चर्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. बट व्हाट वी रियलाइज्ड वाज कि जब एक दफा आपने वो पिक्चर पोस्ट कर दी है फेसबुक वगैरह पे, तो जो आपको एक्सटर्नल आप कंटेंट शेयर करते हो, एक आपकी मोटिवेशन होती है कि लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे. वो जो आपकी जो एसोसिएशन थी उस पिक्चर के साथ, दैट मैजिकल फीलिंग दैट यू हैड is not communicated in the picture, because for everybody else on Facebook or any other network, it's just a normal group picture. What's so special about it? So I think the kind of virality that we hope we'll get with this concept, we didn't get that. So after the initial hype, it eventually like settled down it plateaued at a level where it could not have been a sustained business. और बिजनेस था भी क्या, इट वाज अ पेड ऐप, लोग यूज करते थे एंड सो ऑन. तो व्हाट वी ट्राइड आफ्टर दैट वाज अ बंच ऑफ डिफरेंट थिंग्स के वी हैव दिस टेक्नोलॉजी, लेट्स फिगर आउट other use cases of the same core technology or skill set. So we tried to explore a bunch of different spaces. We tried to enter into the virtual product placement space. The idea was we could use this technology to help YouTube content creators to monetize their video content. Product placement is a major source of revenue for a lot of people. The process in which you get these product placements is pretty like chaotic and old school, and there's a lot of back and forth between the content creator and the advertiser. So our idea was that we will build this platform just where content creator can focus on creating their content. Once they're done with that, we will just take their content, embed a brand into it in a bunch of different ways, and then brand and the content creator can agree that ये वाली जो placement है, we like this. They just click a button and then we publish it on YouTube or whatever. So we wanted to simplify that process, and we did some pretty amazing proof of concept for companies like Maker Studios, Disney owned multi-channel network based out of LA. But I think उस सारी चीज के लिए like we didn't really understand the fundamentals of that business of the space. At building an ad network, at building an ad business is a hard problem. I don't think we could crack it. Uske baad we tried to pivot, but again, I think fundamentally we couldn't really build a business out of on top of the technology. Which brings me to the meta point. Basically, to your point, I think like on your point earlier, innovative technology या differentiated technology होना अच्छी बात है. I don't think that's the only thing that can help you build a business. अगर वो होती तो I think दुनिया शायद किसी और जगह के ऊपर एक different दुनिया होती. To build a business, you need good technology, good product उस technology के ऊपर, and good market. इन तीनों की और उसके अंदर फिर obviously आपकी अपनी go to market motion और आपकी अपनी सारी execution वो बहुत ज़्यादा depend करती है. For example, in this ads business, we were coming from Pakistan. Like my site team was based out of Pakistan. We were outsiders in this whole media ecosystem.
we were outsiders in the advertisement ecosystem. In retrospect, I think it was naive to even attempt that. I wouldn't do it again just because I don't think even today I know enough about that space to attempt something. So I think like as technologists, like when I was naive, I assumed कि मैंने कोई चीज बना ली तो मैं I'll figure out I'll be able to sell it. I think in retrospect चीज बनाना टेक्नोलॉजी बनाना प्रोडक्ट बनाना टेक्नोलॉजी के ऊपर अच्छी मार्केट के लिए and then figuring out the right go-to-market strategy and right go-to-market motion, all of these things are equally important. And if I dare so, maybe GTM in market is way more important than the core product or technology. Yeah, no, I think that's so true. I remember मुझे आपकी कुछ बातों से I was recalling this podcast of Kevin Systrom, जो Lex Friedman के साथ है, उनका जो founder of Instagram थे. And he talked about how insanely competitive, like for example, they started out as a photo sharing app and then they eventually kind of delved into this social media application. Or networks में वो इतने competitive होते हैं कि you leave this much of room, for example, to be outcompeted, and something like a Snapchat would come and literally, like for example, their entire, like for example, differentiation was कि वो आपको एक वो जो एक होती है कि पेरिशेबल वीडियो, अब 15 सेकंड के लिए वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते थे और वो किसी को भेजते और फिर वो उसके बाद डिलीट हो जाती. लेकिन दैट वाज लाइक स्टोरीज का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने शुरू किया था. एंड दे सेड कि बेसिकली स्नैपचैट ने वो मतलब वो एक कॉन्सेप्ट इतना वायरल हुआ. तो इन योर एग्जांपल टू दैट यू वर काइंड ऑफ able to create that virality within a photo sharing space जहाँ पर already the likes of Snapchat and Instagram and others existed. But वो go-to-market strategy, like you pointed out, was not there. मेरे इसमें सवाल ये है कि do you not think that, and again, like this is me, like not knowing the fundamentals of your business, but like me right now in 2022, I think the kind of practical applications of the technology that you built right now are like, मतलब as in very much productized, as you said. कि अब आपके पास virtual stores होते हैं जहाँ पर अगर आपने कोई कपड़े नहीं भी पहने, मतलब as in you can try out, how you would look in different clothes, like if you stand in front of a special mirror, right? और ये आपने जो बड़े बड़े आपके like luxury stores से लेके जो आपके like for example जो multi-billion वो क्या बोलते हैं मल्टीनेशनल क्लोथिंग ब्रांड्स है, उन सब ये वो थोड़ा करके ऐसा करके टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें. सिमिलरली अमेजोन के स्मार्ट स्टोर्स भी इस तरह के सिमिलर कॉन्सेप्ट्स अडॉप्ट करें. तो डू यू नॉट थिंक दैट मे बी दिस टेक्नोलॉजी कुड हैव, व्हिच यू गाइस इवेंचुअली डिड सेल ऑफ टू अ बिजनेस, but do you not feel like this could have also been productized for an already existing business that could have utilized from this technology? Yeah, that's a good question. So I think पहले एक quick comment on the Instagram thing. एक जो चीज हमें we struggled with was also the fact कि ये जो Groopic was an app जो आप अकेले नहीं यूज कर सकते थे. Yeah. Like you had to be somebody. तो Yeah. जो यूसेज versus Instagram जो मैं इधर बैठ के मैं literally like there's a laptop right next to me, मैं उसकी पिक्चर बना के उसके ऊपर फिल्टर लगा के I can post. तो I think Yeah. ये सारी चीजें matter a lot. वो proper. तो I think हमें we were like even when we were able to get that initial traction, मतलब हम Instagram में उस किस्म की कंपनी के उस जैसी traction वो कभी भी नहीं थी और उस तरह की growth भी नहीं हो सकती थी क्योंकि individual use cases नहीं थे. Yep. But I think generally I would say कि on the second part ये सारे जो मतलब बहुत सारी different applications possible थी. And we tried a bunch of different things, but एक जो साथ दूसरी realization भी थी कि technology के constraint. I think what we were really good at as a team was this product versus technology thing. के मतलब मैं market की बात नहीं कर रहा, लेकिन basically मैं product इस point पे कह रहा हूँ end user की interaction और management सारी चीज की. अभी भी आई वुड से कि बहुत सारी मार्केट्स के अंदर जो कंप्यूटर विजन के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे ये वर्चुअल ट्राई ऑन और ये सारा कुछ, दे आर वेरी वेरी अर्ली. लाइक आई डोंट थिंक एनीबडी हैज बीन एबल टू क्रैक दोस प्रॉब्लम्स. जबकि पिछले 5 साल में विजन हैज एक्सप्लोडेड इन टर्म्स ऑफ
the kind of things that you can do and the kind of accuracy that you can achieve while doing those things. So I think back at the time we thought about a bunch of different spaces, but we also knew ke it's that while technology can certainly be used in a bunch of spaces, but वही बात है कि वो उसका product क्या होगी, उसकी GTM क्या होगी और उसको बेचना कितना आसान है. और वो एक दो spaces में हमने try किया, मतलब technology could be used to do virtual product placements, but we couldn't build that business. So we tried a bunch of different things at the time. Yeah. It's like there's this, and if I remember, I'll share it in the show notes. There's a very incredible जो Harvard Innovation Lab है, एक YouTube channel है. उसके अंदर ना they share their cases. वो Innovation Lab is kind of an incubator of sorts. So they share their success stories, and then they also they also call speakers. Who talk about products that didn't pick up, right? हम फेल्ड कंपनीज के बारे में सिर्फ तब सुनते हैं जब उनका एक पब्लिक लेवल लाइक फ्रॉड, जैसे फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ FTX या थेरानोस, तो हम या तो तब सुनते हैं या बट जो बहुत सारी कंपनीज जो दैट नेवर पिक अप, व्हिच आर एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज, we never hear about why they failed, right? And he talks about how the kind of technology they built was revolutionary, right? They were able to kind of file a lot of what do you call that? IPs on that. But they really weren't able to make a product out of it. And that's what, and so it's so important to be able to kind of understand the business fundamentals of the product that you're trying to create. I'll move on from there because there's a lot more to cover. Yep. Let's start with the very basics, right? What exactly is AI? Basically, to me, AI is trying to mimic the human intelligence system in machines. जैसे मैं अगर मैं कंप्यूटर विजन की बात करूं तो ये रियलाइजेशन कि मैं इधर बैठा हूं, मेरे सामने एक वीडियो एक स्क्रीन है जिसमें मैं एक बंदे से बात कर रहा हूं और उसके पीछे एक विंडो है, उसके पीछे रोड है और रोड पे गाड़ी गुजर, ये सारी जो रियलिटी को परसीव करना, और उसके ऊपर अगर सामने से एक बंदा आके मेरे खड़ा हो जाता है और मेरे ऊपर कोई चीज़ फेंकता है तो आई वुड डक. ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये लॉजिकल, पहले ये परसेप्शन के ये इस सिचुएशन में मैं हूँ, और फिर ये अंडरस्टैंडिंग के अगर ये होगा, ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सामने ना कि मेरे ऊपर कोई फेंकेगा तो मैं अटैक करूंगा, ये कॉन्सिक्वेंसेस सोचना और प्लान करना और अपने एक्शन को प्लान करना, ये टू मी दिस इज इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर ये सारा कुछ मैं कंप्यूटर में कर लूंगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. I get that. But so here's where I find it difficult to wrap my head around AI, right? So मेरे लिए क्या चीज़ सेंस मेक करती है कि अगर मैं एक कंप्यूटर का एक मॉडल है, राइट, एक समझ ले, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, मीन कैलकुलेट करना. एक प्रोग्राम है जिसका कॉन्सेप्ट है कि वो एक एवरेज कैलकुलेट करता है. मैं उसको जब भी 10 नंबर दूंगा, वो उसके अंदर से, फॉर एग्जाम्पल, इट विल कैलकुलेट द सेम मीन, राइट? And that's what, for example, that's how it's been programmed. Now, and this is it's a false equivalence. That's not to say कि मतलब as in मैं दो different models को same equate कर रहा हूँ. But अगर मैं एक AI का model है, मैं उसके अंदर 10 inputs डाल रहा हूँ, right? I'm saying that I had let's think of an example of a therapist, right? Or for example, of a friend. I'm telling it 10 things that happened in my day. Okay, I woke up, but I didn't really have I didn't have a good sleep, night sleep, right? Uske baad phir I talked about why I had this in breakfast. I'm just telling my friend about 10 things that happened throughout my day. Now, when I tell that model, that AI model, those 10 things, and the AI model, let's say in this case, has been programmed to give me advice, it might be that every single time I give it that kind of 10, मतलब मैं उसको 10 sentences अपने दिन के बताऊंगा, वो शायद मुझे different result दे. So वो compute क्या कर रहा है exactly, वो मेरा input same रहे, लेकिन उसका output change हो सकता है बार बार, right? तो वो जो उसका output vary करता है, तो उसको हम कभी कभार बोलते हैं ना कि ये black box of calculation. Exactly why it reasoned to give you that piece of advice, right? And if you, for example, why it reasoned to do that, we don't know. Or at least that's what one of the black boxes of AI is. So what
could you kind of help us or help me make sense of that? Yeah, so I think जो इसमें fundamental चीज़ है जो मुझे लगता है, I think like I would fundamentally challenge the assumption कि वो चीज़ differ करती है. I think कि on the exact same inputs और एक input मतलब model का एक starting point भी हो सकता है. On the exact same input, the same model on the same device will give you the exact same output. It's just कि हम जो even in generative AI for example, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता लेकिन I think आपका वो डिपेंड करता है कि मॉडल के लिए इनपुट्स क्या है और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मॉडल का. स्टार्टिंग पॉइंट बहुत सारे मॉडल्स के लिए एक रैंडम नंबर होता है, एक सीड होता है. अगर वो मैं सीड फिक्स कर लूँ और मैं एक ही इनपुट देता हूँ और मैंने सीड फिक्स किया हुआ तो मुझे वो एक ही आउटपुट मिलेगा. इट्स जस्ट कि अगर मैं वो सीड को रैंडमली चेंज करता रहूंगा तो फिर मॉडल के लिए वो इनपुट चेंज हो गया हुआ है और वो डिफरेंट इनपुट से किसी और जगह के ऊपर जाके मुझे आउटपुट मिलेगा. बट मेरा सवाल ये कि how does it like what's the rationale behind saying कि अच्छा वो जो आपने इनपुट चेंज किया, चलें लेट्स टेक योर एग्जांपल, मैंने 10 सवाल में उसको एक इन्फॉर्मेशन चेंज करके दी, उसने मुझे उसके बेसिस पे इन्फॉर्मेशन लाइक उसने इंटरप्रेट की इन्फॉर्मेशन और उसने मुझे उसके जवाब में डिफरेंट जवाब दिया. अब बात बिल्कुल ठीक है, वो दैट मॉडल हैज बीन ट्रेन्ड ऑन लाइक बिलियंस ऑफ like whatever gigabytes of data, like hundreds and thousands of gigabytes of data, whatever. What exactly has been programmed to say like as in for it to kind of give different outputs, and like can that program like as in वो जो programmed हम advanced intelligence उसको किसी वजह से बोल रहे हैं ना, can that be broken down into mathematical function? तो अब जैसे generative AI में बोलते हैं कि वो probabilistic model है, it just guesses what the next word in the sequence is going to be. But and Sam Altman की उस पर थ्रेड भी थी कि वो तो ठीक है कि वो उसको नेक्स्ट वर्ड इन द सीक्वेंस बता रहा है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में, बट वो जो उसकी कैपेसिटी है ना कि वो कॉन्टेक्स्ट को कंप्यूट करके आपको जो नेक्स्ट वर्ड इन द सीक्वेंस बता रहा है, दैट ट्रूली इज व्हाट लाइक फॉर एग्जांपल दैट्स व्हाट एआई इज. सो मतलब as in I'm sorry I'm kind of by the end of the day, even that first part, that understanding is also probability. Like based on an input, understanding case इस चीज की probability क्या है. Like मैं जनरेटिव AI के तो यू नो कि नेक्स्ट मैंने एक टोकन दिया, अगले टोकन की जिस टोकन की सबसे ज्यादा probability है मैं उस टोकन को डिस्प्ले कर देता हूँ. अगर मैं उसको साइड पे निकाल दूँ, विजन में कोई एग्जांपल उठा लेता हूँ. अगर बाय द एंड ऑफ द डे मैं कोई इमेज देता हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करनी है, मैंने व्हीकल्स पर्सन कुछ भी डिटेक्ट करना है, तो वो हर चीज की मुझे एक probability हो सकती है कि चीज की ये probability है. तो इट्स ऑल probabilistic, कोई भी चीज डिटरमिनिस्टिक नहीं है. बेस्ड ऑन दिस मतलब मैं गारंटी नहीं कर सकता कि इस केस के अंदर अनलेस कि मैं एक दफा चला चुका हूँ और मुझे पता है कि इस मॉडल में इस चीज के ऊपर ये रिजल्ट आता है, मैं उसके अलावा गारंटी नहीं कर सकता कि इस एग्जैक्टली इसी केस के ऊपर ये रिजल्ट होगा या नहीं होगा. Okay, that makes sense. चलो if we continue this argument over के AI क्या है तो फिर हम पूरा but let's get to kind of motive, right? So like for our listeners, what exactly is motive, and then how has motive productized AI, right? So I know just I talked about earlier, combines IoT hardware with AI powered applications to connect and automate physical operations. So help us unbundle that. Okay, motive क्या है और what exactly does it do and how does it use AI? Yeah, so motive ये वाली जो description है, ये जो पे चाहिए, तो this is about thinking about what motive does from a technology perspective. Yeah. But if I think about the company overall, so as a company, motive's goal is to enable businesses in the physical economy space and help them become more efficient, safe, and profitable in everything that they do. So now, what are physical economy businesses? Basically, things that like businesses and companies that we see all around us that basically let us live the life that we live today. Essentially, I'm talking about trucking companies, agriculture companies, oil and gas companies जो सारा कुछ ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो प्लम्बर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं जो छोटी वैन्स के ऊपर जाते हैं इधर उधर डिफरेंट जॉब्स के लिए. ऑल ऑफ दीज आर physical companies in the physical economy space जो infrastructure layer है हमारी जिंदगियों के लिए. अगर ये ना हो तो we won't be able to
order on Amazon, get या अगर Amazon पे order नहीं भी इस grocery store के अंदर जो खाना भी पहुंच रहा है वो भी ऐसी 10 companies की collaboration के साथ पहुंच रहा है मैं जाके खरीदता हूँ और मैं खाता हूँ तो our business, our motives business is to build IoT hardware, AI technology to again help these companies become more profitable, efficient, and safe in all their business operations. Now, the way we do that is by building a set of different products जो इनके cases handle करते हैं और वो products की range है from compliance use cases to safety to their fuel efficiency, their vehicle maintenance, their spend management. We have products that touch almost all the different aspects of their business. Specifically fleet, right? गाड़ियों की बात कर रहे हैं. Moving Sorry? part. Specifically fleet, right? गाड़ियों की या trucks. Yes. Today, but eventually, I think मतलब हम और बहुत सारी चीजें भी करेंगे. But yes, today we take care of their moving assets. Yes. Okay. So, but लेकिन उसमें गाड़ियाँ touch नहीं है. Like we are installing construction vehicles as well. जो cranes और different जो oil rigs के ऊपर जो equipment है जो move कर रही चीजें वो सारी चीजें वो भी शामिल है. Okay. And how does AI help you enable or optimize for that? Like, for example, like, given that you are the director of engineering for this specific function, so like, आपका एक vision or goal क्या है कि to like, how is this like मेरा सवाल basically, how is this technology different from, let's say, whatever technology existed 5 years ago? Absolutely. I think the way to think about this is all of the, so if I keep AI on the side, बाकी सारी चीजें हमारे IoT सेंसर्स और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स और जो स्पेंड मैनेजमेंट है वो सारे कुछ वो सारी डेटा जनरेट कर रहे हैं और वो डेटा है उस डेटा के ऊपर इनसाइट्स कैसे बिल्ड करनी है टू एक्चुअली हेल्प देम इम्प्रूव एवरीथिंग दैट अ फ्लीट डज वो सारा काम ही आएगा अब एंड देयर आर अ बंच ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन दैट लेवल टू स्टार्ट विद सेफ्टी फॉर एग्जांपल सेफ्टी में वी इंस्टॉल्ड Dashcam. Our customers have installed Dashcam in their fleets. We have, and using their Dashcams, they can monitor their drivers' performance on the road. So initially, like without AI, वो उनके पास archaic tools है या उन्हें video request करनी पड़ती है अगर कोई hard brake लगती थी या hard acceleration होती थी तो they would get the video and they would see कि क्या हो रहा है या अगर कोई complaint आती है कि आपका driver सही drive नहीं कर रहा तो they would go back, retrieve that video clip and see कि उसमें क्या हो रहा है उस video clip में to understand the driver behavior. Now, this is before AI. When you start using AI can proactively understand the driver behavior and tell you what's a risky driving behavior जिसके अंदर driver आपको engage कर रहा है. For example, if they're not maintaining a safe distance from the vehicle in front of them, that's one of the most riskiest things that you can do as a driver and it's a leading cause of accidents on the road. So if the drivers are not maintaining a safe distance, AI can flag that. If they're using cell phone, if they're not wearing a seatbelt, if they just roll through the stop signs, all of these things can be detected by AI to really understand the risk profile of a driver. And then using AI, because the AI has a good understanding of everything that is happening across the fleet and across the network on our devices, we can use AI to rank drivers. Okay, and we've done that actually. Like we know who the worst drivers on our network are, and we know that the worst drivers on our network are almost like 5x more likely to run into accident within the next X months compared to the best drivers on our network. That's one use of AI. We are using AI today to help with fuel efficiency, with understanding their spend and identifying किस जगह की कौन risky लोग हैं spend management product के लिए या नहीं. So there are a bunch of different things that we are leveraging AI for. So that's very interesting and like obviously like for example it has helped you and like many other businesses क्योंकि खास तौर पे ये एक ऐसा मैनुअल टास्क है जो ऑटोमेट मैनुअल तो नहीं मतलब एक इसका बहुत स्ट्रॉन्ग यूज केस है राइट लाइक फॉर एग्जांपल अब आप ड्राइविंग की बात करें तो अब जो पिछले 5-10 सालों में one of the biggest like for example one of I'd say that what started to bring AI into everyday conversations in terms of practical use was the notion of self-driving cars. कि यार अच्छा अब एक वक्त आएगा जब self-driving cars होगी, right? And I know that for example, Tesla का जो अपना software है,
how like incredibly powerful that is, that जो आपका उसमें जो वो आपके like if you put it on support, like for example, like you're still there at the driver's seat, but if you, for example, enable that functionality to be able to for it to drive, you literally have to do nothing, right? It's so incredible. So जो ये like what is the use of AI in terms of self-driving cars, and when will we truly reach cars? I'm just talking about, like, for example, vehicles generally. Like जो ये आपका जो ये use of AI है, is that going to be the next disruptive front of technology in terms of for an everyday man that we're going to see? One, and how soon is that going to be? और मेरा इस पे फिर दूसरा सवाल ये कि जैसे हमने बात की थोड़ी देर पहले, तो ये तो पहला दूसरा सवाल है, इसके बाद मैं थोड़ा तीसरा सवाल करूंगा, थोड़ा फिलोसफी और एथिक्स ऑफ एआई के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व करता है, कि जैसे हमने बात की कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, राइट? इट इनपुट्स certain data about some things, right? And then it decides, for example, to best take, मतलब as in कि वो एक्शन क्या होगा. अब इस प्रोबेबिलिस्टिक अगर दुनिया में सबसे अच्छा मॉडल भी होगा ना, वो 99.99% एक्यूरेट भी अगर हो, वो 0.01% ऑफ इनएक्यूरेसी या फॉल्ट का एक चांस है. What, like for example, and given that this is generally like a significant leap for our society to kind of wrap their heads around this technology, and we've seen in the past that whenever कोई एक बहुत fundamental shift आता है ना, या बहुत बड़ा shift आता है, तो हम we're not receptive to it. Our first kind of evolutionary function of it is to disregard it or to kind of उसको दबाने का होता है, right? So मैं आपको थोड़े और खुले अल्फाज में बोल देता हूँ. I'm saying, let's say 10 लोग मर जाते हैं because, for example, of accidents through self-driving cars. What I see is that legislation आ जाएगी कि नहीं, अब बंद कर दो इसको, like, even though it might be that when you compare the data points, वो शायद 10 times कम होंगे, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसी अनहोनी चीज है ना कि यार वो आप उसको ह्यूमन फॉल्ट को, अगर किसी से कोई एक बंदे से एक्सीडेंट हो गया, यू कैन होल्ड देम अकाउंटेबल. टेक्नोलॉजी को कैसे अकाउंटेबल होल्ड करोगे? So these are some questions that don't keep me up at night yet, but I'd like to kind of ask from you as well. So the first question was about the role of AI in self-driving, right? Yeah. So I think, like, fundamentally, I think the most well-recognized commercial use case of AI today is self-driving, or self-driving is all about AI. Like, I don't think there's anything about self-driving that's not AI. So AI is like all the layers that you think about, think in a self-driving stack, from perception to prediction to planning, controls maybe, but all of these things are AI. I think जो एक चीज जो हुई है वो ये कि I think when everything started, पहला प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ AI से, जो चीज AI के बगैर नहीं हो सकती थी, वो परसेप्शन था. You needed AI models to solve the vision problem. तो उधर AI सबसे पहले आई, और initially in prediction and planning modules, people still hard coded things. Even Tesla, for the longest time, I shouldn't say, like, for a long time, they actually hard coded everything. For example, अगर आप हाईवे पे ड्राइव करते हुए जा रहे हैं and you want to go into the left lane, you could feel the car के वो कार अगर आपने लेफ्ट लेन में जाना है तो एक 5 डिग्रीज का स्टीयरिंग यूं होता है, फिर आप उधर जाते हैं, फिर 5 डिग्रीज वो स्टीयरिंग सीधा हो जाता है. वर्सेस ओवर टाइम तो दिस वाज द ह्यूरिस्टिक्स या नॉन एआई अप्रोच इनिशियली जो कंट्रोल वाले उसके मॉडल के अंदर लिखती थी, लेकिन ओवर टाइम दे लर्नड के व्हाट्स अ मोर स्मूदर वे ऑफ चेंजिंग लेन्स. एंड तो आई थिंक स्टार्ट और तरीके से हुआ था. लोगों ने AI या ML के बगैर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की इस पूरे पिक्चर में, कुछ कंपोनेंट्स, बट ओवर टाइम एवरीबॉडी रियलाइज्ड एंड राइटली सो, ये चीजें AI से बेहतर हो सकती हैं. तो सेल्फ ड्राइविंग कार से सारी AI वाली चीजें. Now in terms of adoption, I think like वो जो ethics वाली बात है 100%, like it's as humans we react to these things, और ये लेकिन नई चीज़ों के ऊपर या टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों के ऊपर हम ऐसे रिएक्ट करते हैं. और उसकी दुनिया में आई थिंक और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं.
कोविड का जो रिएक्शन था वर्सेस जो जनरल फ्लू का रिएक्शन होता है, फ्लू इम्पैक्ट्स लॉट ऑफ पीपल एज वेल, बट कोविड का रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट था. आई थिंक इस केस के अंदर जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर अगर वो बेशक वो 100 लोगों की जान बच भी रही है, लेकिन अगर एक खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होएगा तो it will create more panic. That's just how humans are. एक जहाज गिर जाता है तो वो इट्स इन न्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उससे एक और जहाज गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है वर्सेस द नंबर ऑफ पीपल, और उसके अंदर जो लोग जिनकी डेथ होती है versus the number of people who die on the roads. It's just how we think about these things. I think ये issue real है, लेकिन at the same time when the technology is there, and it's only a matter of if it, like it's not a matter of if, it's only a matter of when. When the technology is there, I don't think ये considerations इतनी बड़ी considerations होंगी. Like people will get used to this idea. I agree, people will get used to this idea. जहाज़ों में लोग सफर करते हैं, गाड़ियों में भी रोड सफर, ये वही रिएक्शन होता है जो मेरे ख्याल में जब घोड़ों से गाड़ियों में सोचे तो लोग गाड़ियों के बारे में भी सोचते थे. So I agree with you कि for example, लेकिन वो एक so मेरा like on average हम adopt कर लेंगे, right? मेरा सवाल ये है, तो and I really don't want to get into the philosophy of it and kind of the different factors at play here, because I think वो वही बात है ना कि अच्छा, how different are we then compared to the last tectonic shift in technology and when it came about and how quickly did we adopt, right? अगर हम इंटरनेट की एग्जांपल दें तो हमने relatively with open arms we adopted, right? Internet changed the world in literally 30 years, like it completely, like it has changed the world in maybe in a way that we still haven't quite completely grasped, right? मेरा सवाल ये है कि the fear of the unknown that we talked about, right? कि अच्छा फ्लू है, कोविड है, तो फ्लू का रिएक्शन और कोविड का रिएक्शन क्यों इतना, क्योंकि वो एक fear of the unknown है, right? Okay, many people, when you kind of think about, आपने जैसे बात की कि accident से, it's certain, right, that if even one accident happens, right, or like let's say for high profile personality है कोई इसका होता है, तो वो चीज जो पूरी central debate आ जाएगी, वो आ जाएगी कि यार, like for example, have we thought through the ethics of this technology, right? And the reason why I think this is so different than anything that we've previously kind of faced is that it's individual. It's like, for example, with previously अगर कोई टेक्नोलॉजी का यूज किसी बुरे काम के लिए होता था तो वो एक उस पर्सन को you could hold accountable. Right. Here the difference is that अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आती है, और वो जो चीज है ना, वो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी इंटरनल डिबेट, वो एक बहुत बड़ी डिबेट स्पार्क करेगी between two kind of camps that I think will form and have already formed. हम इसकी अगर आपको उसका यूज केस देखना है ना, तो आप जनरेटिव एआई को देख लें, जिसमें एक कैंप ये बात कर रहा है कि यार एक तो ये कि एज अ सोसाइटी आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट. आपकी कितनी जॉब्स हैं, जैसे जनरेटिव एआई, अब वो बोलता है कि यार कंटेंट राइटर कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा, जो आपके ऑपरेशनल काम है जिसमें आपकी कोई क्रिएटिव इनपुट नहीं होता वो कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा. अच्छा, सिमिलरली जब हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात करें तो कितने ड्राइवर्स, फ्लीट वगैरह सब रिप्लेस कर देगा. अच्छा, तो लाइक आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट? एंड देन द अदर आर्ग्यूमेंट इज दैट हु गेट्स टू बी होल्ड अकाउंटेबल. एंड आई थिंक दीज आर, इसके पीछे आपके पास इतना पॉपुलर सपोर्ट मिल जाएगा टू द पॉलिटिशियंस दैट आर गोइंग टू मेक अ केस फॉर दिस एंड एंड अप devising policies that impact these matters and concerns, that हो सकता है कि हम शायद there might come a period, and this is not coming from me, this is just actually coming from lots of people, is that there might come a period where we have to kind of where we might see this backlash from majority towards this towards adaptation of this technology. Like, what are your thoughts of it, and how can we preempt that, and how can we kind of, but हम कैसे उसके लिए बेहतर प्रिपेयर हो सकते हैं, हम कैसे
उन मसलों को अभी से हैंडल करने की प्रिपरेशन कर सकते हैं? जो अकाउंटेबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है, आई थिंक दैट्स एन ऑनगोइंग डिबेट. आई थिंक बड़े लॉ स्कूल्स के अंदर दिस इज एन, आई नो पीपल who've been involved in these discussions. कंपनीज जो ओन करती हैं वो किसी ना किसी लेवल के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होंगी. और इनफैक्ट जैसे टेस्ला की टेस्ला की अपनी इंश्योरेंस है. आई थिंक दीज कंपनीज नो कि उन्हें they'll base, if they are driving the car automatically, like they are insuring it on some level, which also means कि वो किसी न किसी लेवल के ऊपर अकाउंटेबल होंगे इन सारी चीज़ों के लिए. आई थिंक जो बाकी जो रिएक्शन है, इट्स कम्प्लीटली फेयर कि अगर कोई मेजर एक कैटास्ट्रोफी होती है, उसका रिएक्शन आएगा, रेगुलेशन आएगी. बट आई थिंक ये हमेशा ये चीज़ें ऐसी ही होती रही और ये हैंड इन हैंड चलती रहती हैं. जब आप थोड़ी सी यू ट्राई टू पुश द बाउंड्री ऑन वन लेवल, कुछ चीज़ें होती हैं और फिर रेगुलेशन आती है. और ये भी इधर भी ऐसे ही होगा. आई डोंट थिंक इट द लाइक अगेन आई डोंट सी अ फ्यूचर जिधर ये चीज़ें नहीं होंगी, ये सेल्फ ड्राइविंग कार ना हो बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीज इशूज. सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी. नाउ द पाथ टुवर्ड्स इट वुड बी अ बिट बम्पी एट टाइम्स. और वो ये होगा कि किसी टाइम पे टेक्नोलॉजी आगे जाएगी, रेगुलेशन पीछे होगी, कुछ चीज़ें अजीब होंगी, रेगुलेशन विल कैच अप, थोड़ी सी कंस्ट्रेंट्स उसके अंदर ऐड होंगे एंड सो ऑन. और ये भी वी सी दिस ऑल द टाइम इन ऑल दीज इंडस्ट्रीज. ये अभी जो क्रिप्टो की सारी डिबेट चल रही है वो भी इसी किस्म की डिबेट है कि लाइक व्हाट रोल डिड रेगुलेशन और रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैव टू प्ले इन दिस. वो एक बैड एक्टर आया, उसने चीज़ों को स्ट्रेच किया. वो a lot of people lost money उसके ऊपर. और वो सिस्टम के लिए ओवरऑल अच्छा होता है. लाइक अगर आपको कोई एक्टर आके सिस्टम की बाउंड्रीज को थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश करता है, तो सिस्टम अडैप्ट थ्रू दैट. लाइक इट्स लाइक अ इकोसिस्टम ऑफ सॉर्ट. एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट कि वो चीज़ें अडॉप्ट करती हैं और वो रेगुलेशन चेंज हो जाएगी, वो एक्सपेंड कर जाएगी उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए. और अगर आप ये नहीं करेंगे तो मतलब अगर रेगुलेशन इतनी स्ट्रिक्ट है कि कोई चीज उससे बाहर निकल ही नहीं सकती, तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट इनोवेटिंग. आई थिंक इस केस में ऐसा शायद ना हो, क्योंकि अगर यूएस को अब जो शायद लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू थिंक अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स एज द पायनियर एंड द बीकन ऑफ technological innovation, if it doesn't, it's going to be out innovated by China. And so it knows that it can't like वो regressive policy शायद एक टर्म के लिए एक प्रेसिडेंट आके वो शायद उस मैंडेट पे जीत भी जाए और 4 साल के लिए कम भी कर देगा, लेकिन उन्हें पता है कि यार उनकी जो एक फॉरेन पॉलिसी है जहाँ पे आपकी नेक्स्ट राइजिंग पावर चाइना जो है वो बिल्कुल भी स्लो डाउन नहीं कर रही इस रिगार्ड्स के बारे में. और वहाँ तो अगर कोई like let's say like God forbid any accident happens there, it's not like people can revolt and be like, oh, now you need to change the policy and like we can't accept this and whatnot. So it's going to be out innovated if it doesn't compete, and right now it pretty much has extreme vested interest. Like the biggest companies that are there, मतलब in US की almost हर बड़ी कंपनी अब AI में heavily invest कर रही है. तो ऐसा नहीं है कि वो जब आपके पास vested interest आते हैं तो आपकी lobbies create होती हैं. Politicians are bought into this. So you're right. I agree with you. There is no hopefully there is no future where we don't get to see these technological advances. There will be actors that misuse this, as there have been throughout history, or they will kind of exploit the system, but the system will grow better because of it. So we've talked a lot about AI. Let's talk about okay. So from the perspective of like, now let's get back. Let's answer a couple of more practical questions. From a product manager perspective, AI product manager क्या होता है? Like how is an AI product manager different from any other product manager? Good question. I think product management वही है. I like in terms of like if you think about the product manager's core job, unfortunately वो बहुत सारी कंपनीज में बहुत डिफरेंट रोल है और डिफरेंट असम्पशन है कि प्रोडक्ट मैनेजर क्या कर रहा होगा. लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो वो ये है कि टू लुक एट द मार्केट, आइडेंटिफाई problems in the market, figure out a solution, and figure out a go to market figure out a solution, potential product, work with the engineering teams to execute on that project, and then
once a project like product is built or MVP या जो भी उसके pages हैं वो figure out the go to market strategy और product बना के फिर उसको work with sales CS teams to push it out in the market. Like वो एक वो horizontal layer from problem identification to delivery. I think fundamentally on this level, product management, I think is same, चाहे वो AI हो या non-AI product हो. But I think where the like in terms of this overall role, now some of these specific components are somewhat different from an AI for an AI product. और उसकी तो let me talk about वो differences हैं क्या. I think fundamentally जो एक major difference है जो AI product managers को मेरे ख्याल में जब तक किसी product manager को वो समझ नहीं आता तो they struggle with it is the fact कि these are probabilistic models. Like कोई चीज deterministic नहीं है. आपको ये नहीं पता होगा कि हर केस के अंदर ये रिजल्ट आएगा. There is always a long tail of scenarios, long tail of cases जिसके अंदर प्रोडक्ट को सही चलना चाहिए लेकिन वो सही नहीं चलेगी. तो unlike traditional products जिधर आप ये सोचते हो कि when I work with the engineering team मैंने एक MVP बनवा लिया है और MVP feature मैंने launch करना है, by the time you launch the product you're maybe like 95% done in terms of the engineering work. वो 5% bugs post launch आपको नजर आएंगे, आप वापस जाएंगे उनको fix करेंगे and you will build the next feature and so on. That's fundamentally this kind of like framework is fundamentally different from what happens in AI. In an AI product, I think when you're done with the engineering development and you're ready to launch the product, you're probably only done with maybe like 40 to 50% of the work. And maybe a bulk of the work will have to happen after that, because that's where your product will run into a bunch of scenarios that your model was not trained on, or there will be long tail of edge cases. You need to identify what are those cases, how you have to figure out strategies कि हम वो cases identify कैसे करेंगे, वो उनका data कैसे collect करेंगे, model को कैसे retrain करेंगे, and how will we improve it. And there's a long path for this improvement. So fundamentally understanding this one constraint and then building the rest of the product roadmap and product GTM strategy and everything with this constraint in mind is I think different in AI product management versus non-AI product management. उसके अंदर फिर obviously I think if your product, if the better understanding you have of this core technology, I think the better product better role that you can play on the top layer. आपको and if you don't have the understanding, or even if you do have the understanding, you need to work with engineering very, very closely. You have to define product in a way that it respects, because in a lot of these problems, you're essentially like a lot of the time you're pushing the boundaries of what is possible. So you need to like product needs to respect the engineering constraints, engineering team, engineering needs to respect the product use case and UX and basically figure out the right solution. तो ये सारी चीज़ इसलिए कि basically nature of the product is different. It's iterative rather than very straight linear execution. I think ये fundamental difference. That's very interesting. So मेरा ये जो थोड़ा सा जो वेरिएशन आती है जो आपकी प्रोडक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल में, वो इस वजह से आपने जो ये बात बोली कि वो 40 to 50% ऑफ द जॉब इज डन व्हेन अ फीचर और सम पार्ट ऑफ इट इज रिलीज, क्योंकि उस पर आगे आइटरेशंस पे इतना काम करना है. वो इसलिए है क्योंकि वो एक नई टेक्नोलॉजी है, या वो इसलिए है क्योंकि वो नेचर ऑफ AI एज अ प्रोडक्ट ऐसा है? पहला सवाल ये. दूसरा जो काइंड ऑफ इसका एक और सवाल है वो ये कि what kind of people will make good product managers for good AI product managers, right? Kyunki when you think about the role of product managers, right? Like, will it only be will product managers need to be extremely technologically apt, right? And I'm assuming that eventually, like, they'll probably also need to go or undergo, a certain course of ethics or whatnot to be able to work in that department. But mera, like, जो सवाल है वो ये है कि like how will that role evolve? So are people that are going to be extremely technologically apt that can understand the nature of the product? And I know, for example,
कि आप टेक्नोलॉजी के साथ मतलब एज इन you don't need to know the engineering knowledge or the programming knowledge of that of of the technology that's through which the product is being built to serve as a product manager. But क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे सवाल इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी एक काइंड ऑफ कंटेंशियस टेक्नोलॉजी है थोड़ी, और उसके जो रिपरकशंस हैं, जो बंदा उसके अंदर एक इनपुट प्रोवाइड कर रहा है टू बिल्डिंग द प्रोडक्ट फॉर द यूजर, अगर वो ही नहीं समझ पा रहा कि मैं किस चीज या मैं किस कंज्यूमर के लिए बिल्ड कर रहा हूँ या मेरे इसके क्या रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं, वो क्योंकि इतने बड़े हो सकते हैं, वो इतने ज्यादा हो सकते हैं, that this might just become an important kind of an important prerequisite for them or for someone to work in this kind of in this role. Makes sense. So yeah, on the first question, कि वो 40 to 50% क्यों है? I think it's essentially because of the nature of these products. It's just the आप अगर ये प्रॉब्लम ये ऐसा ना होता तो सेल्फ ड्राइविंग प्रॉब्लम कब का सॉल्व हो चुका होता. That's a very direct way of putting it. क्योंकि it's hard to preempt in code for collect data for and code for all the real world scenarios. उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप व्हीकल डिटेक्शन की मैं बात करता हूँ, व्हीकल लाइक इट्स अ कोर कंपोनेंट किसी भी सेल्फ ड्राइविंग कार सिस्टम के अंदर आपको पता होना चाहिए कि मेरे इर्द गिर्द कौन सी गाड़ियाँ. अगर आपने पहले दिन अगर आपने व्हीकल डिटेक्शन ट्रेन किया है बहुत सारी रैंडम इमेजेस लेके, सारी गाड़ियाँ सीधी होंगी, राइट, लाइक होपफुली. अगर तो 90% आप गाड़ियाँ रोड पे आपको सीधी नजर आती हैं, बिल्कुल सही नॉर्मल शेप में. कुछ गाड़ियों के ऊपर के पीछे एक बाइक लगी होती है, वो एक थोड़ा सा यूनिक सिनेरियो है. कुछ गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां पड़ी होती हैं, वो उससे यूनिक सिनेरियो है. और मैं पिछले लेट्स से कि 15 साल से ड्राइव कर रहा हूँ. थैंकफुली आई हैव नेवर सीन अ कार ऑन द रोड जो उल्टी हुई भी हो. ठीक है, तो अब लेकिन अब ये वाला जो सिनेरियो, अगर कभी मॉडल ने उल्टी हुई भी गाड़ी देखी ही नहीं हुई रोड के ऊपर, तो मॉडल डजंट नो कि गाड़ी कभी उल्टी भी हो सकती है, तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. So क्या करेगा अगर for example if it comes across something that it is not able to kind of recognize or identify, तो what does it do? Does it वो कुछ भी कर सकता है. अगर वो डिटेक्ट नहीं करता, वी नोन लाइक टेस्ला के जो एक्सीडेंट्स हुए वो ऐसे हुए हैं कि सामने एक ट्रक है और टेस्ला को नजर नहीं हुआ एंड द कार लैंड इनटू दैट ट्रक. इट डिडंट फील कि वो आगे ट्रक है, इट थॉट कि पैसे सूरज की. तो आप क्वालिफायर्स नहीं इंक्लूड कर सकते कि अच्छा यार if you don't like if you can't recognize it then the safest option is just stop, like if नो बट लाइक अगर मेरे सामने रोड के मुझे रोड नजर आ रही है और रोड के ऊपर मुझे बंदा नजर ही नहीं आ रहा, तो मुझे तो खाली रोड नजर आ रही होगी ना, खाली रोड लग रही होगी. अच्छा, अब ऑब्जेक्ट ही डिटेक्ट नहीं हो रहा. It's not like an object. एग्जैक्टली मतलब अगर उल्टी गाड़ी में इट डजंट फिट इनटू दैट मॉडल ऑफ कार्स, मॉडल ऑफ लाइक गाड़ियां हमेशा सीधी होती हैं, लेकिन अगर एक गाड़ी उल्टी नजर आ गई तो मुझे तो वो गाड़ी नहीं लगेगी. और तो माय पॉइंट इज कि दिस इज द काइंड ऑफ लॉन्ग टेल सिनेरियो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. मतलब अगर आपने पहला मॉडल बनाया था जो खाली गाड़ियां सीधी थी, उसके ऊपर ट्रक के ऊपर गाड़ियां लगी हुई भी नहीं थी, बाइक वाली गाड़ियां भी नहीं थी, जिनके ऊपर ऐसी गाड़ियां भी नहीं थी जिनके ऊपर बैक पे बाइक लगी हो, तो वो ये सारा कुछ नहीं डिटेक्ट कर पाएगा. और तो वो जो पहला मॉडल है वो 40% केसेस में चलेगा, लेकिन ऐसे सारे जो लॉन्ग टेल ऑफ सिनेरियोज है वो उनके ऊपर आपका इतना ज्यादा टाइम लगना है जो मॉडल सॉल्व नहीं कर सकता. तो दैट्स द हार्ड पार्ट, दैट्स व्हाट makes this problem challenging. कि आप you need to look out for these scenarios. The challenge is not just कि मैंने like so if you think about how does a AI model work, it needs a lot of training data, right? अब अगर मैं 1 million मैंने images collect कर लिए हैं, लेकिन think about a million cars that last million cars that you've seen on the road, उनमें से कोई एक गाड़ी भी उल्टी थी, और अगर थी तो एक थी या दो थी. Like you have to specifically collect a lot of data about upside down cars so that the model is trained on those कि ये गाड़ियाँ. तो basically the point is कि it's not just that your model would not work on these scenarios. The challenge is how do you figure out when this scenario is happening in the world? How do you collect data for it? How do you retrain your models on it to improve the model's performance in the field? That's really the hard part. And I think companies like Tesla
like the advantage that Tesla has is that they have so many cars on the road that they see these tons and tons of long tail scenarios day in day out, and they've built lots and lots of internal mechanism and systems and processes to identify when they think their car is seeing something unique and abnormal in the world. They collect the data around it, they retrain their models and push a new update out. And I think companies who are not like product managers or companies who are not focusing on this second aspect of how to like identify bad data, retrain your models, like they will fail miserably. And I think we've seen that in our industry. One of the reasons why Motive has been super successful in building our AI features is because we recognize this very early on, that we don't just have to build the AI products, but we also need to build like technology, and we have to have a very good strategy in terms of how to like strategy on how to collect this data, how to retrain our models and whatnot. And that has helped us build the right products. I think that has played a major role in our success of AI features. Makes sense. And then my second question about like product managers, and then the kind of Yeah. So the product person. managers, I think like my belief is that product managers, if they have the technology understanding, it's great, but they don't have to have a deep technology understanding. What they need to have is the appreciation of these kind of challenges, the humility that this is what they're up against. And Yeah. they need to work closely with the engineering team, and hopefully like with the right kind of partnership, they can uh, they can argue or fight for the right customer experience, and the technology team provides the constraints, and they can figure out the right solutions, the right product solutions with the right technology for the customers. Okay, so you don't need to be technical. I Like can take a breath of sigh. I think I like again I wouldn't say like you don't need to be technical like Technically I think trained, you like need for to have example, you some don't need a computer science degree. That's what I Actually, I would meant. put it differently. I think you would need computer science degree, because to me computer science also teaches you this logical thinking, this process, this pattern, like this logical argument, problem solving process. I think that process is important. I don't think you need a computer vision degree or a data science degree to be a good data or ML or AI product manager. So like But you do those think I that think you put need a better. computer science degree. Sorry. It will help, or is it a I think prerequisite? computer science degree, yes. You don't like, again like even if you have a computer vision degree or computer vision data science degree, that will help you. But I think you don't need to have that. But I think you have to have basic CS understanding to be a good product manager here. And the reason I say that is because I think like one of the core jobs for product managers is to like again, as I said, be a partner with engineering team, and partnership means challenging them in a challenging your team, challenging your partners in a pretty constructive way. And if they don't feel the respect for you, if they think that you don't know the technology, you don't understand the constraints, you would not be able to build an effective partnership. So you have Yeah. to have the more understanding you have, it's better. But I think the base level is you have to have CS understanding. Like if you don't have CS understanding, I don't think a really hardcore like computer an AI engineer or engineering manager would respect you at the same level, or they it would be you would have a harder time raising the bar for them. Hmm. Makes sense. Makes sense. And so like now I'm getting to my last couple of questions because we are running out of time. Generative AI जो भी हम जो एक मतलब as in जो भी आजकल जो एक generative AI आने के बाद, a lot of people have been raising this concern that आप AI को मॉडल ट्रेन करते हो अभी तक जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी that was human generated, right? आपने सारे के सारे जो ट्रेनिंग मॉडल्स बनाए ही Yeah. उसके वो that were generated through जो इनपुट उसका था वो ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट था. Yeah. अब आप अगर ह्यूमंस के पास ये एक टेक्नोलॉजी जो एक टूल दे दोगे बट माइट रिड्यूस देयर मेंटल फैकल्टीज इन अ वे वेयर फॉर एग्जांपल, और ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है बट लेट्स से कि ये एक सर्टेन लाइक 80-90% ऑफ जो आपने उनकी क्रिएटिव स्पेस या क्रिएटिव थिंकिंग को ख़त्म कर दिया, कम कर दिया, और आपने बहुत ज़्यादा उनके काम को ऑटोमेट तो कर दिया बट आपने उस ऑटोमेशन के तरीके में उनकी क्रिएटिव थिंकिंग, उनके
ओरिजिनल थॉट प्रोसेस को किल कर दिया, तो जो आपका नया ट्रेनिंग मॉडल और जो नया ट्रेनिंग मटेरियल जनरेट हो रहा होगा, it's not going to be of the same quality that that existed in the first place to create this technology. So I'm thinking about it from this perspective, that because, like, for example, by time aapka jo quality of your training data and it starts to reduce, so will it not be that AI will also eventually die of this kind of, like, unless and until it finds a way to be able to create original thinking or new thinking, without having मतलब as in वो फिर वो वही बात होगी जनरली सेंशियंट एआई की हम बात करें, बट मेरा like ये एक सवाल है कि like do you think that that's a possibility? I think मैं इसके बारे में बिल्कुल उल्टा सोचता हूँ. I think कि with things like this, what is essentially happening is कि अगर मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचूं, तो या अपनी कोई भी एक्टिविटी में राइटिंग के बारे में सोच सकता हूँ. I think मैं जो राइटिंग जो एक क्रिएटिव प्रोसेस है उसके दो पार्ट्स हैं मेरी नज़र में. एक वो सोचना कि मैं क्या करना चाहता हूँ और फिर एक्चुअली करना. और अगर मेरे दिमाग में कोई एक अच्छा आइडिया है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम ये उसके डिफरेंट तरीके सोचने में लगाता हूँ कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, तो मेरा वो जो सोचने वाला जो प्रोसेस है ना, वो आई थिंक स्लो हो रहा है. लेकिन मुझे जो लगता है वो ये कि, और अगर मैं एक्चुअली सोचूं कि कोर आइडिया वाज मे बी 10% ऑफ द और 20% ऑफ द क्रिएटिविटी, बाकी जो मैंने 80% टाइम लगा दिया है वो उस आइडिया की एक्सप्लेनेशन या डिटेल्स में डाल दी जो मुझे लगता है कि मंडेन है थोड़ी सी शायद. और उसकी जो वेरिएशंस जितनी क्रिएट करनी है उनके ऊपर जो टाइम एनर्जी मैं लगा रहा हूँ, वो तो मेरा 1 घंटा सोचने का टाइम था, मेरे एक आइडिया था, मैंने वो घंटा में से 50 मिनट या 55 मिनट मैंने उसके ऊपर लगा दिया कि यार मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं. वर्सेस नाउ आई हैव दिस टूल दैट बेसिकली टेक्स केयर ऑफ ऑल द मंडेन थिंग्स, जनरेटिंग ऑप्शंस, गिविंग मी लाइक डिफरेंट आइडियाज कि इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं. तो आई कैन essentially focus more on the creative aspect, and human brain is very very powerful. अगर मैं उसको फ्री कर दूंगा कि ये बोर काम करने के बजाय वो इन 10 चीजों जो पहले जिस चीज को 5% टाइम मिल रहा था वो उसको अब ज्यादा टाइम मिल रहा है, तो आई थिंक आई विल बी एबल टू जनरेट मोर आइडियाज, आई विल बी एबल टू क्रिएट मोर कंटेंट इन टूल्स को यूज करते हुए. and in fact maybe I'm the rate at which the content is produced in the world, the rate at which new ideas are produced in the world, it will just go through the roof, just because you've taken the majority of the time that was used for mundane things and transformed it into creative thought process वाला time. तो आई सी कि ये जितनी भी जो कुछ दुनिया में हो रहा है, और फिर कनेक्टिंग टू योर मेन क्वेश्चन, आई थिंक कि कंटेंट नए आइडियाज की डेवलपमेंट ज्यादा तेज हो जाएगी, कंटेंट ज्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, और वो अगर एआई से कनेक्ट करना है कि उसके ट्रेनिंग मटेरियल से कनेक्ट करना है, तो यस मतलब इल हैव मोर वेरिड मोर क्रेजी आइडियाज टू गेट ट्रेन्ड ऑन. तो आई थिंक वो मेरे ख्याल में तो ये इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन की तरफ जा रहा है rather than the other side. मेरा वही बात है ना कि I think it will go towards that. Like, maybe the question is wrong to ask at this point in time. I just thought it was an interesting one. But you're right. I think in the short term, अब वो वही बात है, short term क्या 100 साल short term है, 1000 साल short term है, like वो intelligence explosion की तरफ ही जाएगा. वो क्या करेगा, वो एक without language barrier eventually, AI शायद ऐसे लोगों को, where for example will enable people to be able to kind of, it will like, just like I think technology has been the greatest equalizer. Like we started your story by saying you could do anything, and this would have not been possible without the internet. So AI might become the greatest equalizer humankind has ever seen. But it might just be that it is also what kind of causes us to recognize or realize our limit, because वो सारे प्रोसेस को शायद इतना फास्टन कर दे. बट खैर इस पर कभी हम एक और बात करेंगे.
or also just to your counterpoint, I've also read literature, not read literature, but I've also heard about literature that's there about okay, we truly don't understand how our brains function, because at times the creative output is actually through the boring mundane tasks that we do. Like for example, it's not like we're focusing on doing creative work. It's that वो निकलता है, like वो जो एक idea ना, और it makes sense to me. Like if you think about, like some of the greatest writers in history, that have articulated their thoughts, like and you think about like वो पहले क्या डे जॉब करते थे, या वो पहले वो मतलब बस वो बहुत ऑर्डिनरी कामों में भी इन्वॉल्व हुए होते थे. तो yeah, I like there's so much that we don't know, and that's why this is so interesting, and we just started talking about all of this, and this is why I love to kind of I'm sure Ali will have it again. Ali, so final question before we let you go. What are your favorite books, right? And they don't need to be about engineering, AI, product management, or startups. Like generally, what do you like to read? What are you curious about that you like to share with the audience? Yeah. Actually, I think एक चीज जो like before sharing the books, जो एक trick मैंने I think जिंदगी में बहुत late discover की है, but I want to share that trick जो I think really helps me when I'm reading the books. तो एक तो मैं मुझे I generally don't read a lot of fiction. तो जब मैं जनरली दुनिया कैसे चलती है, दुनिया में चीज़ें कैसे होती हैं, मुझे वो चीज़ें ज़्यादा पसंद है पढ़ना. और जब मैं वो पढ़ रहा होता हूँ तो मैं पहले किंडल पे पढ़ रहा होता था, या किंडल पे मज़ा नहीं आता पढ़ने का, तो मैं अभी भी फैन ऑफ हार्ड कवर बुक्स. तो वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं रहेंगी, मतलब मैं फिर बाद में इफ आई वांट टू गो बैक एंड लुक समथिंग, तो वो बुक ढूंढो, पेज ढूंढो, मतलब वो इट्स हार्ड टू रिटेन इन्फॉर्मेशन. तो I realized and built a really interesting model, like a framework, जिसमें मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत मजा आता है. वो ये कि when I'm reading a book, I've realized since then कि और लोग स्मार्ट लोग पहले से करते थे, लेकिन मैंने खुद डिस्कवर किया था. I was very proud of it कि this is a really interesting thing. What I do is कि मैं जब कोई चीज़ पढ़ रहा होता हूँ तो मैं बुक के जो आखिरी 2-3 पेजेस हैं उनके ऊपर मैं लिखता जाता हूँ हर पॉइंट. लाइक अगर मैं पेज नंबर 80 के ऊपर कोई एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी है मैंने, तो मैं वो जाके बुक के एंड के ऊपर मैं 3 सेक्शन में चीज़ें ऐड करता हूँ. एक, मेरे कोई चीज़ पढ़ने से अगर मुझे कोई आइडिया आया है तो मैं एक पेज पे वो लिखना शुरू कर देता हूँ. एक पेज के ऊपर मैं फ्यूचर रीडिंग्स लिखना शुरू कर देता हूँ इस बुक से जो मुझे मिली है. और एक पेज पे मैं जो इस बुक ने जो कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट या डेटा कोई डेटा पॉइंट शेयर किया वो मैं वो लिख देता हूँ. और उसके बाद व्हेन आई रेड द बुक आई जस्ट ट्रांसफर इट टू अ डिजिटल नोटबुक. मतलब आखिर में उसके बाद फिर व्हेनेवर आई वांट टू रेफर टू द बुक आई डोंट हैव टू गो बैक, आई कैन जस्ट ओपन दैट पेज ऑन माय फोन एंड जस्ट बेसिकली एसेंशियली रिवाइज द होल बुक. और अगर मैंने फिर दोबारा कोई चीज़ पढ़नी है उसमें, तो आई नो प्रिसाइसली कि ये पॉइंट इस पेज पे एड्रेस है, तो मैं बुक खोल के जाके पढ़ सकता हूँ. तो आई थिंक वो मेरी नॉलेज एक्यूमुलेशन और रिटेंशन के लिए आई बिल्ट दिस रियली इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क दैट आई रियली लाइक. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक बुक्स में दो बुक्स के मैं कहूँगा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं. आई थिंक वो हर किसी को पढ़नी चाहिए. एक है प्रिडिक्टिबली रैशनल, जो basically there's this MIT professor Dan Riley. He talks about like traditional economic theory है, जिस तरीके से humans behave करते हैं वो है कि वो rationality वाली theory है कि हम human beings हैं, हम rational beings हैं, हम सारा कुछ rationally करते हैं. So it's a really interesting book about like with a bunch of different very interesting examples about the fact कि एक तो ये कि हम irrational हैं, हम सारी चीज़ें अपना नफा नुकसान देख के रैशनैलिटी बेसिस पे नहीं करते, हम irrational डिसीजन देते हैं. बट वी ऑल्सो वी आर प्रिडिक्टिबली रैशनल कि आप एक सिनेरियो ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको पता होगा कि ये बंदे एक irrational चीज़ है लेकिन बंदा वही चीज़ करेगा. तो दोज एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम प्रोडक्ट मैनेजमेंट परस्पेक्टिव, लाइक हाउ टू थिंक अबाउट प्रोडक्ट, लाइक वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है. बट नॉट फ्रॉम प्रोडक्ट बट जनरली जिंदगी में आप जो कुछ भी देख रहे होते हैं आप उस लेंस में देखना शुरू करें तो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस. और दूसरी बुक इज ट्राइब ऑफ मेंटर्स, टिम फेरिस. It's a really interesting book. Tim Ferriss is basically like he at the beginning of pandemic, around that time he compiled a list of 10 or something questions, and he sent that list to a bunch of different people in the world. Like really very successful people, very successful people I heard, but when varied field. Like वो monk को भी भेजी है तो वो एक technologist को भी भेजी है तो वो एक exactly like बहुत yeah. So it's a really interesting like summary of
experiences from a lot of different people. So वो जो questions तुमने पूछे हुए, they are really really interesting and very very impactful questions. Like the quality of questions itself is amazing. अगर आप बाकी book ना भी पढ़ें तो सिर्फ questions और why he asked those specific questions, like that chapter, the first chapter itself was very very impactful, but then everything else is pretty amazing. Yeah, funny thing, when I'm asking this question, like I often anticipate what the reader is going to say. तो मुझे like it's almost मेरे दिमाग में मैंने सोचा था आप sapiens जरूर बोलेंगे. Like you're gonna say sapiens by Yuval Noah Harari. When you said special. नहीं, वो भी but है, लेकिन ये मुझे मजे की लगती है. yeah. All right. Thank you so much. It was honestly, I could continue this conversation for another couple of hours, and I could probably bore you with a lot of my very kind of simplistic questions, at least to you. But it was a pleasure, and I hope we have you again. And I hope we kind of, मेरा तो अपने दिमाग में, in my head, I want to create this. I've already accumulated a couple of people, all engineers, to kind of delve and still kind of unbundle questions around AI that, I'm just voicing them out, but I can promise you there are, and even 100%. especially within Pakistan, there's so many people that are interested in it. Yeah. But thank you so much for coming, Ali. It was an absolute pleasure. Yeah, likewise. And thank you so much for listening, everyone. Like always, give us a like, subscribe, give us feedback. It's extremely important in terms of helping us build, our initial phases of our product, which is this podcast. And see you soon in the next episode. Thank you. Bye-bye.